Hello students, in this video we will discuss Newton's third equation of motion, which is also known as position velocity relation. In my previous video we have discussed the first and the second equation for uniformly accelerated motion. आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन जो कहलाता है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. And the equation is v square minus u square is equal to 2as. The variable used is v is for final velocity, u for initial velocity, a for acceleration and as for displacement. Now the derivation will be the graphical representation. So first of all we will plot a graph to derive this graphically. So this is my origin, this is my time axis, this will be velocity. Okay, and the same thing will be repeated here also. The body will not start from the origin. The moving object in this case will have some initial velocity, say u. Okay, so we will plot the slope not starting from the origin. हम origin से start नहीं हो करके यहाँ से straight line draw करेंगे and it will be like this, and this is the nature for the uniformly accelerated motion, which is a slant line, and this is the line which represents the uniformly accelerated motion in a form of a straight line. फिर से वही बात हम करेंगे. We will write all the information which could be just depicted from this graph, that from here to here this is initial velocity, so this will be also initial velocity, right? From here to here it is my final velocity, so this will be also final velocity. This is my time, so this will be also time. Let us write the information. Now OA is equal to CD, which is equal to what? This is equal to U. Okay, now OE is equal to DB or BD. So OE is equal to BD. What is that equal to? This is equal to final velocity. So this is V, right? Now we are left with this one, this line. So OD is equal to AC, and this is my time axis. So this will be also time because both are parallel and equidistant. So OD is equal to AC is equal to time. हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस वैल्यू के बारे में because this we have already discussed in first and second equation. You can go through that video for more detail. Okay, now the derivation part is v square minus u square is equal to 2as, which is a position velocity relation. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे फिर से हमें displacement find out करनी है. Okay, so we have seen in the second equation, जब हम second equation को derive कर रहे थे तो हमने find out किया that for finding out the displacement or the distance from the graph by graphical method, we always find the area enclosed within the graph. तो यहाँ पे भी displacement को ही हम find out करेंगे in order to derive this final equation. याद कीजिए पहले के equation में हमने area enclosed within the graph, ये पूरे shapes को हमने लिया था और ये रहा हमारा एक triangular shape and this is my rectangular shape. We have calculated individually the area of this triangle and area of rectangle. ऐसा हमने second equation of motion को derive करने के लिए किया. ठीक है, तो लेकिन third equation of motion में भी हम for the calculation of displacement we will calculate the area enclosed within the graph. यहाँ पे भी area हम calculate करेंगे, but we will not find out the area of this triangle and this rectangle. हम overall area find out करेंगे इस पूरे particular shape की. Okay, पूरे shape का मतलब है यहाँ से A B C D O A. ठीक है, और ये shape आप देखिए ये हमारा एक geometrical shape है which is known as trapezium. So this will be area of trapezium. And which is the point for denoting this shape? A B D O A लिख सकते हैं. तो ये रहा हमारा ट्रैपेजियम. अगर हम ट्रैपेजियम की एरिया फाइंड आउट कर ले देन वी विल गेट द डिस्प्लेसमेंट इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ. द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ ट्रैपेजियम इज सम ऑफ
parallel sides divided by 2 into height. Now sum of parallel sides divided by 2 into height, this is the formula for finding out the area of the trapezium, and this will give us the displacement in this graph. What is the parallel sides? We will first of all find out that which are the parallel sides. तो आप देखिए A, B and OD, ये तो हमारा नॉन पैरेलल साइड्स है, तो हमारे पास we are left with these two sides, okay, and these two sides are parallel to each other, right? That is OA and BD. So we will sum up these two parallel sides, OA plus BD divided by 2, okay, into height. तो which is the height over here? ये तो parallel sides है, then this is the height, so OD will be my height. Now OA, इस बॉक्स के हेल्प से आप देखिए what is the value for OA. OA is denoted for initial velocity u, तो OA के प्लेस में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे u plus BD. What is BD? BD is final velocity, so here we will write V. In place of BD I am going to write V divided by 2 into OD. OD क्या है हमारा? OD is time, so in place of OD we can write here time. Okay, now what we will do here, we will eliminate the value of time, मतलब हम time की एक value substitute करेंगे from the equation which is the first equation of motion. ठीक है, so we will recall what is first equation of motion. We have V is equal to U plus AT. ठीक है, so this will be V minus U is equal to AT. okay, U को हमने इधर ले आया, अब हमें चाहिए टाइम, तो टाइम को एलिमिनेट करने के लिए दिस विल गिव यू T विल बी इक्वल टू V माइनस U डिवाइडेड बाई A. T के वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे यहाँ, दैट इज V माइनस U डिवाइडेड बाई A, सो U प्लस V डिवाइडेड बाई 2 एंड वैल्यू ऑफ T इज़ व्हाट, हमने यहाँ से पुट करना है इस वैल्यू को यहाँ पे, सो दिस इज V माइनस U डिवाइडेड बाई A. ठीक है, अब ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट, S, राइट. इसको अरेंज कीजिए, सो दिस विल बी गिविंग अस S इज इक्वल टू U प्लस V को हम V प्लस U भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो आई एम राइटिंग V प्लस U डिवाइडेड बाई 2 इंटू व्हाट इज दिस V माइनस U डिवाइडेड बाई A. ठीक है, 2 इंटू A, डेनोमिनेटर को सॉल्व कीजिए, दिस विल बी V प्लस U इंटू V माइनस U न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डेनोमिनेटर, दैट इज 2 इंटू A विल बी इक्वल टू 2A. व्हाट इज दिस, दिस इज अगेन S. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा S इंटू 2A विल बी इक्वल टू 2AS, एंड दिस विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या रह गया, V प्लस U इंटू V माइनस U. We have an algebraic identity which says that A plus B into A minus B is equal to A square minus B square. From algebra we have this identity, right? और यहाँ पे हमारे पास क्या है, V प्लस यू इंटू वी माइनस यू, तो V प्लस यू इंटू वी माइनस यू, इसको भी तो हम लिख सकते हैं V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट. सो दिस विल बी गिविंग अस 2AS will be equal to, from algebraic identity, V square minus U square. Again on rearranging we will get what, V square minus U square is equal to 2AS. We have got graphically, hence we have derived this equation. So this is how we have to derive the third equation of motion. In the next video I'll be coming up with some numerical problems based on all these three equations. So stay tuned and see you all in my next video. Thank you.